Okay, so today's I'm just diverging from last topic that was on serial port. Need to talk a little bit about this bit operations and manipulations. Since we are all the time busy with the bit operations in microcontrollers, so there are some bit operations that we uh, need to see how they are done, bit level operations. So right, so some popular operations are bit masking. They are used to separate desired bits from a byte. Then there is bit testing uh, that is used to check a byte whether it is 1 or 0 and do something. Uh, Bit setting resetting, these are used to set controllable external word devices and internally stored configuration bytes in a bits in a byte. बिट्स इन अ बाइट होना चाहिए था bit masking, a desired bit masking used to separate desired bits from a byte of an integer. There is an example that you have some device connected 4-bit device that is connected to port B, and port B has 4 bits that are configured as input. So when you read port B, you are going to get some garbage values on the values that are configured as output. So to get rid of that, sometimes you need to get rid of that if you want to do a comparison of this port value read from the port based on only these 4 bits, you have to mask this. So the mask for this will be 00111 000. When you will AND this mask with this port B value, what will happen that these don't cares will become 0 because 0 and with X don't care 0, 0 with don't care, and so on. So you will get the correct output, and so you can do this in C short X. X is equal to port B and 0x3C, or port B is equal to port B. And if you want, this value will be, of course, not between 0 and 15 as a 4-bit value should be. The 4-bit value should be between 0 and 15 or 0 and X. But this is basically there are 2 zeros on the LSB side. So this value will not be uh, multiplied by 4. So if you want to make it go from 0 to 15, what can you do? What can we do to the value read from port B? And Heather, bhai. Heather Irfan, what can we do to the value read from port B? Hassan Habib, we want a value to be between 0 and 15. What can we do this value that we have read from port B? We must this एंड मास्क किया इसको एक अपने अपने डिजायर्ड मास्क वैल्यू से, और उसके बाद क्या करेंगे टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू बिटवीन 0 एंड 15. नाउ इट विल नॉट बी 0 एंड 15, it will be between 0 and 15 times 4 60. It will be between 15 and 60, 0 and 60. So
how do you get this value to between 0 and 15? Umair, do सर you मुझे correct? समझ नहीं आ रहा 0 से 15 क्या करना है, कंफ्यूज्ड. So we can shift right. Yeah, we can shift right this value. Uh, so यार ये साफ भी करना था भाई. साफ करना इसको रहने दो, उसको साफ कर. So so basically you have port B of the microcontroller that has 8 inputs, and bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. So you have a device connected as input device, say 4-bit ADC, external ADC is connected, a 4-bit external ADC is connected. So, so how would you read this value? So the 4-bit ADC value can be seen that these are output ports. They are configured as output ports. These are configured as input ports. So you want to read when you read port B as a whole, you are going to get these values that are configured as input, and that will be in a way garbage value. Because the ADC is connected here, which is 4-bit ADC, which is connected to only these 4 inputs. थोड़ा उधर कर लो, ये भी हिल रहा है यार. Right. So the value read when you say port B is equal to X is equal to port B, and at that time, say for example, ADC value is 1101. Then you will read value X will be equal to don't care, you don't know, and 1101, you don't know. Because these are port B values are uh, output configured, and they can be input configured also, but you don't want to use them. So this is the value that is the interested bits, bits of interest, BOI, bits of interest. These are the bits of interest here. So if you mash this with 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 ended with this 0, 0, and you will get the same value 1, 0, 0, 1, 0, 0. That's zoom कर दो ना. So basically you want to now this value will be ADC value can be anything. At other time ADC value can be 0, 0, 1, 0, 0. Some other point could be anything. So these are the 4 values. The values that they can change from 0, 0, 0, of course, to maximum value of ADC, which is 1, 1, 1. So you want to separate these values. So you have already separated them.
but they are not from 0 to 15. Now if I do x is equal to x shifted left 2 times, then these bits of interest will become over here 0 0, 2 zeros will enter there 0 0, and these will be our bits of interest. uh, 4 bits will come here. So now they will be these values can be go from 0 to 15. So these value can go to 0 to 15. Here they don't go from 0 to 15. So if your software requires that these values should be between 0 and 15, because you are reading an ADC and you expect that the value should be between 0 and 15. So this is how you can do it. So that is AND mask. AND mask is basically there to get rid of a value. Why would we use an OR mask? OR mask किस लिए यूज करेंगे? Why would we use an OR mask? Zainab, 0 0 F, right? So why would we use an OR mask? OR mask is used to set a particular bit without disturbing the other bits in a byte. So these are can be used, OR mask can be used for setting bits. So if I have a byte x, x is equal to something, 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 something. And if I add this with 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, what will happen? If we add this with this, what will happen? This will make this value 1, regardless whether it was a 0 or 1. It will be with ORing with 1 will mean that this will become 1, and they with or with 0 remains the same. So this is used to set bits. Similarly, if you want to reset a bit, you can use an AND mask, which is opposite of this. So if you want to reset a bit, you need to use an OR mask. So for OR mask, you want to set a bit x is equal to question mark, 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 question mark. This is the value of x. And you want to reset a particular bit. You say this bit is the one that you want to reset. Then you will end it with 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. So as a result, this will be 0 and this will be question mark. So this mask will be in binary, this mask will be 0B. This in hex, this mask will be 0xFD. 1101 is D. Similarly, this mask in binary is equal to 0B this, but in hex it will be equal to 0x10.
So these are different masks that are available for resetting a particular bit or setting a particular bit or masking particular bits. Uh, so similar. Uh, so this is the concept of what you say the masking of a particular bit. So to create a mask and then you use that mask to do something particular thing. So there is an other example. This is a little bit more advanced, you can say, example that we have a 10-bit AC ADC connected to microcontroller, and that is a very special ADC. It is better than the ADC already present in the microcontroller. Its speed is higher and it is much better. Sampling rate is better. So you need to use an external ADC with your microcontroller. So it's a 10-bit ADC. So cannot fit with, of course, with the one single port. So you need to have a one port, 8-bit port for input, and the 2 bits coming from some other port. So here I have connected these ports in a fashion that uh, port A is all connected to the lower bits of ADC, and the last two bits are connected to bit number 6 and 5 of port B. So port A is all connected to ADC and port B is connected like this. So how would you get a 10-bit value from this ADC? You want to have a variable that corresponds to the 10-bit value of ADC. That will not be a byte size variable, or it will not be a short variable, because the short variables only contain 8 bits. So you need some integer that has 16 bits. And out of that, for example, for this 10-bit ADC, only lower 10 bits will be used. So the value of that integer will go from 0 to maximum of 1023. So how do you extract these values? So this is how the software engineers do. They read ADC low is equal to port A. That's simple. ADC high is equal to port B and 0x60. Why this and with 0x60? सर एडीसी लो और एडीसी हाई क्या होता है, एक दफा बता देंगे प्लीज? ADC low और ADC high क्या होता है? All right. Another Ahmed. Ahmed किधर है? यार ये जरा करना. शेयरिंग स्टॉप कर दी मैंने. तो इधर ले आओ. So you problem is design problem, इसको कह सकते हैं आप. Design problem could be one of similar problem in the next quiz. There can be a design problem like this. So design problem that you have a 10-bit ADC connected external ADC, 10-bit uh, ADC external connected to a microcontroller. तो हाउ डू यू कनेक्ट 10-bit एडीसी? एडीसी की आउटपुट 10 बिट है, माइक्रोकंट्रोलर से कैसे कनेक्ट करेंगे? कैसे कनेक्ट करेंगे?
जाहिर है 10 बिट है, तो 8 बिट के साथ तो एक पोर्ट तो 8 बिट की होती है। सो हाउ डू वी कनेक्ट? ये आपका 10 बिट एडीसी है जो बाहर से एक एनालॉग सिग्नल ले रहा है और आपको वो कन्वर्ट करके दे रहा है 10 बिट एडीसी। इसकी आउटपुट 10 बिट है। तो आप क्या करेंगे कि पोर्ट ए या पोर्ट डी ले लें, पोर्ट ए ले लें या पोर्ट डी, उसके साथ ही इसकी D0 लगा देते हैं अप टू D7। तो ये वो एडीसी 10 बिट का है, तो इसकी दो और बिट भी होंगी, दैट इज D8 D9, 10 बिट का एडीसी। अब इनको कहां पे कनेक्ट करें? इनको कहां पे कनेक्ट करेंगे हम कोई और पोर्ट ले लेते हैं, पोर्ट बी। इन दिस एग्जांपल दे आर कनेक्टेड टू बिट नंबर 5 एंड बिट नंबर 6। यू मे आस्क इस ये क्यों आ गई हैं? इसलिए कि जिस पर्टिकुलर डिजाइन पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें बाकी सारी बिट्स जो है ना वो मैंने किसी और डिवाइसेस से कोई और सेंसर लगे हुए हैं, और ये दो मेरे पास बिट्स बच गई थी, तो मैंने कहा चलो इनको इस एडीसी के साथ कनेक्ट कर लेते। बाकी इस पोर्ट बी जो है इसकी बाकी सारी चीजें बिट 5 6 जो है, बाकी सारी बिट्स जो है ना वो डोंट केयर है, 0 से लेकर 4 तक और आखिरी वाली ये डोंट केयर है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड फॉर एडीसी रीड, आई एम ओनली इंटरेस्टेड विद दीज टू। So this is different from internal ADC where you can just connect to any pin and you can read the values. Azmir, lecture. All right. So you can read these values like this. Uh, so the question is, how do you do that? First of all, you have to read byte by byte. So you create two variables. One byte variable is ADC low, दो वेरिएबल आपने बनाए। एडीसी लो को आपने किस पे रीड करेंगे? पोर्ट ए। तो ये 8 बिट की वैल्यू एडीसी लो में आ गई। अब आपने क्या करना है? एडीसी हाई रीड किया, तो ये इज इक्वल टू दूसरी 8 बिट यहां से रीड करनी है, उसमें सिर्फ 2 बिट आपके काम की हैं, बाकी नहीं है। तो लेकिन वो चूंकि एमएसबी साइड है तो इसको हाई हाई बिट्स कहेंगे, ये लोअर बिट्स हैं, ये हायर बिट्स हैं, तो इसको कहेंगे पोर्ट बी। लेकिन ये पोर्ट बी में ये सारी वो भी हैं क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे कि एडीसी हाई की जो भी वैल्यू है, डोंट केयर डोंट केयर question mark question mark don't care don't care don't care, that is our uh, adc high। सर जब भी एडीसी हाई को रीड करेंगे इसमें से ये दो बिट्स हैं जो हमें इंटरेस्ट की है, क्योंकि ये बिट 5 और 6 से लगी हुई हैं, काउंटिंग फ्रॉम बिट 0, बिट 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन? सही है? नजर आ रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन मार्क कुछ पूछना चाह रहा था कोई? ये दो इंटरेस्टिंग बिट्स हैं जो कि इसमें से हैं। तो हाउ डू वी रीड आवर, अब इसको मैच किससे करेंगे?
इसको मैस्क किससे करेंगे? एंड से कर दें सर। एंड से मास्क करेंगे। इसका मास्क क्या बनेगा? मास्क ये बनेगा 0 1 1 0 0 0 0 0। तो हमारे पास ये दो डिजायर बिट्स आ जाएंगी, बाकी सारी बिट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। अब हम क्या करें? अब हमें पता है एडीसी हाई में ये दो बिट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, एडीसी लो में दो बिट्स पड़ी हुई हैं। हमने 16 बिट का एक वेरिएबल बनाना है जिसमें ये सारी अपनी अपनी जगह पे हों। तो बेसिकली एडीसी हाई में हमारे पास पड़ी हुई हैं 0 H हाई वाली बिट्स 0 0 0 0 0। इस मैच को हम क्या कहेंगे? 0 1 1 0 किसके बराबर होता है हेक्स में? 0 1 1 0 हेक्स में किसके बराबर होता है? 6 के। मैं अब जवाब ही नहीं देते, मैं खुद ही मुझे बताना पड़ता है। फिर 0x60 हो जाएगा। तो इससे इसको मैच किया तो ये आंसर आ गया। इसमें हाई बिट्स हैं, ये एडीसी हाई है, इसमें ये है। एडीसी लो में ये सारी बिट्स हैं। 8 लो इधर है, 2 हाई इधर। हमने बनाना है कि ये वाली इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाए कि ये इस तरह से हो जाए 0 0 0 0 0 0 हाई 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 लो 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 लो, ताकि ये 10 बिट की वैल्यू किसी एक इंटीजर में कंबाइन होके हमें एक 10 बिट का वेरिएबल मिल जाए। तो कैसे करेंगे? उसके लिए पहले तो इसको हम करते हैं टाइप कास्ट, इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं। जब किसी बाइट को आप इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं, ये बाइट है 0 H H 0 0 0 0 0, इसको जब आप अनसाइंड इंट में टाइप कास्ट करेंगे, अनसाइंड इंट में टाइप कास्ट कर इसका करते हैं ना टाइप कास्टिंग। आप शुरू में ये डाल देते हैं अनसाइंड इंट। जब इसको अनसाइंड इंट में टाइप कास्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अगर तो साइंड में करेंगे ना टाइप कास्ट, तो ये जो है ना, अगर इसकी ये वाली बिट 1 होती तो वो ही कॉपी हो जाती है। आपको याद होगा कि साइन बिट रिप्लेस हो जाती है। अनसाइंड में यहाँ पे अगर 0 है तो 0 ही कॉपी होगा, 1 है तो 1 ही कॉपी होगा। तो दिस 0 ही एक्सटेंशन होती है। अनसाइंड में हमेशा 0 एक्सटेंशन होती है। जब आप एक छोटी बाइट से बड़ी बाइट में जाते हैं तो इसके साथ हमेशा 0 0 ही आएंगे। तो जब इसको अनसाइंड इंट में टाइप कास्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 हाई हाई 0 0 0 0 0। अब मैं इसको यहां पे लेके आना है, तो इसको किधर क्या करूं कि ये दो बिट्स जो है ना यहाँ पे आ जाएं? शिफ्ट कर देंगे सर। हाँ, शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट 3 टाइम्स। तो ये बन जाएगा 0 0 0 0 0 0। ये 3 दफा जब शिफ्ट होंगे तो ये एच इधर आ जाएगा, एच एच 0 0 0 0 0 0 0 0। 3 दफा इसको शिफ्ट शिफ्ट किया तो ये बन गया। अब ये है कि इसमें फिर हम दूसरा और कर देंगे। जब इसको टाइप कास्ट करेंगे लो वाले को भी, लो वाले को हाई बाइट को जब हमने किया हाई, इसी तरह एडीसी लो है जो कि लोअर वैल्यूज हमने रीड की हुई हैं पोर्ट से, तो वो उसको जब हम टाइप कास्ट करेंगे तो उसके साथ भी 0 0 0 लग जाएंगे। अब हम इन दोनों को टाइप कास्ट करने के बाद इसको टाइप कास्ट किए
अब इन दोनों को हम इसको भी टाइपकास्ट कर दिया, अनसाइंड इंट से इसको टाइपकास्ट किया, ये बन गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, और कर देंगे, और ऑपरेशन, लॉजिक और ऐड भी कर सकते हैं, लॉजिक और भी कर लें या ऐड कर लें, वन एट द सेम थिंग। तो ये आ जाएगा एल एल, क्योंकि ये जीरोज हैं तो ऐड भी कर लें और भी कर लें, तो प्रोसेसर के लिए कोई मसला नहीं है, दोनों ही एक बात है। तो ये आपके पास 10 बिट की वैल्यू बन गई जो आपको चाहिए थी। और इसको साधारण है, आपको इंट में स्टोर करना का पड़ेगा, इंट एडीसी अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू दिस। इसको एक वेरिएबल होगा जो कि इंट टाइप का होगा, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो 8 बिट से बड़ी। तो इस तरह से बेसिकली you combine values that are bigger than the processor port। ये प्रोसेसर 8 बिट का है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हमेशा इसके साथ कोई 8 बिट की डिवाइस ही लगानी है। तो there you go, so this is all that is explained in this over here। So you can also do some bit testing। Say for example, in this example you have two door sensors connected to bit number 4 and 6, and what you want to do is, if you want to check door 1 is open, and you assume that when the door is open you get logic 1, then you have to get a bit masking. So short x is equal to port A, if x and 0 1 0x1 0, sound alarm। So that way you can sound alarm। So this is how you test a particular bit। So this is the masking that is required over here। अगर तो डोर बंद होगा तो x को जब इस मैच से एंड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये दिस बुलियन एक्सप्रेशन विल कैलकुलेट टू 0। अगर डोर ओपन होगा तो दिस बुलियन एक्सप्रेशन विल कैलकुलेट टू नॉन जीरो वैल्यू which will become true, and this will sound the alarm। सेम केस हेयर, अगर आपने मेथड 2 किया है, मेथड 2 ये है कि आपको पता है कि ये 4th बिट पे लगा हुआ है, तो यू कैन से इफ x and 1 shift left 4 times, so 1 shifted left 4 times becomes 0x10, sound alarm। तो मेथड 3 क्या है, ये सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है कि उसमें आप एक हैश डिफाइन करते हैं, डोर 1 इक्वल टू 4, एंड इफ शॉर्ट एक्स करते हैं पोर्ट ए, इफ एक्स एंड 1 शिफ्टेड लेफ्ट डोर 1। तो हैश डिफाइन क्या करता है, हैश डिफाइन ये करता है कि जहां भी कहीं डोर 1 आ रहा होगा ना, उसको कट करके उसकी जगह पे क्या लिख देगा, 4। ये हैश डिफाइन करता है। तो जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो वो डोर 1 आपको नहीं लिखा हुआ नजर कहीं आएगा, उसकी जगह 4 लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि जहां जहां भी 4 डोर 1 लिखा होगा वो उसको 4 रिप्लेस कर देगा। लेकिन इसका फायदा क्या है, कोई बताएगा इसका फायदा, देखते हैं क्या है। कुछ लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ भाई कोई इसका फायदा बताएगा। एनीवन को फायदा बताएं भाई इसका।
ये करने का क्या फायदा है? हैश डिफाइन डोर 1 इक्वल टू 4, इसके करने का क्या फायदा है? एनीबॉडी? जैनब? जब मैं क्वेश्चन पूछना शुरू होता हूँ पार्टिसिपेंट्स की एकदम से तादाद जो है ना नीचे आ जाती है, भाग जाते हैं लोग, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। हाँ भाई तुबा, उबैद, व्हाट्स द डू यू हैव बेनिफिट ऑफ यूजिंग हैश डिफाइंस? हम सर आपने बताया कि जब हम हैश डिफाइन यूज करते हैं तो डोर 1 की जगह 4 आ जाएगा। फायदा क्या हुआ? सर जहाँ जहाँ भी डोर 1 होगा वहाँ 4 आ जाएगा। फायदा क्या हुआ? अभी तक मेरा क्वेश्चन रिमेन्स, इसका फायदा क्या हुआ? मैं खुद ही 4 लिख दूं, डोर 1 को रहने दूं, ना लिखो? अम्म, सर कोड पढ़ने में आसान होगा, फिर अगर आपने चेंजेस करनी होंगी तो बस आप ऊपर वो हैश डिफाइन में चेंज कर देंगे बिट, उसका वो वेरी जो भी गुड, यस, नंबर। दैट इज द ट्रू आंसर। कि ये जो हैश डिफाइन है 4 है, ये डोर 1 को कल अगर मेरा डोर 1 जो है चेंज होके बिट 0 से लग जाता है, तो मुझे सारा कोड तलाश करके डोर 1 की जगह जगह जाके उसको वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा। मेरी कल अगर हार्डवेयर चेंज होती है तो यहाँ पे आके मुझे सिर्फ यहाँ पर डोर 1 की हैश डिफाइन को करूंगा तो खुद ब खुद सारा कोड चेंज हो जाएगा। वंडरफुल थिंग, सच ए नाइस थिंग। आपके जितने भी प्रोसेसर के अंदर हैश डिफाइंस हैं, आप जब कोई ऑन करते हैं, कोई बिट ऑन करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बिट टाइमर 0 बिट ऑन बिट जो है उसको 1 करते हैं, तो ऑन बिट जो है वो हैश डिफाइन है एज अ बिट 7 इन टाइमर कंट्रोल। इट्स नॉट टाइमर 0, क्या एक नंबर है, टाइमर 0 ऑन। और आपको याद होगा कि दैट इन टाइमर कंट्रोल रजिस्टर दैट इज बिट 7। So when I say timer 0 on bit on bit equal to 1, basically timer 0 on bit replace हो जाती है bit 7 of the microcontroller. So and it can do assembly language. It can work at bit level. Although it's not a it can no other processor cannot do. Only microcontroller can do and work at the bit level. I would see that in when we start our assembly language programming. So if we want to check both doors are open and then sound the alarm, या send an SMS, that's advanced case के उसमें आपने alarm ही sound नहीं करना बल्कि SMS करनी है through the GPS modem use करके, नहीं GSM modem use करके you can send an SMS. तो उस केस में ये हैश डिफाइन डोर 1 4 है, हैश डिफाइन डोर 2 6 है। रीड किया पोर्ट से, इफ एक्स इक्वल टू दिस एंड एक्स इक्वल टू दिस, then send SMS. It would mean that both doors are open. So something you'll see that in bit manipulation, there are very long lines of bits being manipulated in single line. It's something that engineers enjoy doing. I don't know why. It shouldn't be like that. But whenever I read some code written by somebody else, you will see that there is a long line of uh, bit manipulations done in a single line. Long list of operations done in a single line. Uh, so same case here. If you want to do bit setting, you can define bit to fan. And if you want to turn on the fan, you can say port A is equal to port A 1 shift left fan times. Fan is 2, so it will make the bit number and it will not disturb other bits in the port. So maybe you have to use a latch over here rather than port. So sometimes it's possible कि आपका कहीं प्रोसेसर में यहाँ पर रीड करने के लिए पोर्ट को अगर उसको राइट भी कर रहे हैं तो रीड करने के लिए आपको यहाँ पर लैच यूज करना पड़ेगा।
So if you want to turn off the fan, then you have to invert your this mask. This is the mask that you have created for turning on. उसको not करेंगे तो ये turn off वाला fan map बन जाए. So same case for the heater or fan. So this is a good example for you. Write code to turn off fan and turn on heater in one if statement. One logic statement, I would say, not if statement, logic statement. It is also possible that you, this is very interesting. This is my personal practical experience, honestly, that you sometimes you make a board and accidentally when you're making board, you uh, don't follow the proper bus structure and accidentally some bits are gets swapped with each other. Say for example, in this example here in front of you, bit 1 was which should have gone to bit 1 of the port 7 for the ADC. It is accidentally connected to bit 7, bit I don't know, bit 4. Similarly, bit 4 is connected to bit 1. So ये दो पिन हार्डवेयर में चेंज हो गई हैं. During testing, this problem was not discovered. Now we have hundreds and thousands of PCBs that are already manufactured. तो अब उसके हार्डवेयर में जाके उनको चेंज करना, तारें काट के उनको दोबारा लगाना, ये तो मुश्किल हो जाएगा. But thanks to software can help over here. In the software, you can swap those bits. That way, you can get the correct value of the ADC. So you read port A, extract bit 4, and change it to the location that it is desired. Extract bit 1 and change it to the location that it is should go to, and clear the bits in X first. Then you OR them with these bits, so you get the final answer, which is correct answer. So that way you can actually do this. So this is solving hardware problems in software. अगर आप कहते हैं तो इसका मैं समझा देता हूँ कि ये क्या हो रहा है. Then we can end today's lecture. It's not very long lecture today, so I जी can सर समझा दें. समझा दें. अच्छा, आना जरा ताहिर साहब, इस पे सेट कर दो. आपके पास एक बाइट है, लेट्स से एक्स है एक बाइट, जिसमें ये एक्स बिट जो है वो वाई बिट से आपने स्वैप करनी, एंड अदर शुड नॉट बी destroyed. They should remain the same. So these values should remain the same. Only you want this x to go there and this to want to go there. So what you do is k कह देते हैं, x यहाँ भी यूज हो रहा है ना, ये k इधर कह देते हैं. k में से हम पहले ये वैल्यू निकालते हैं x की. तो bit underscore x is equal to, इसको हम करेंगे मास्क करेंगे 0 0 0 1 0 0 0 0. इसको जब मास्क करेंगे तो बिट एक्स आ जाएगी, एंड करेंगे एंड ऑपरेशन, तो बिट एक्स आ जाएगी हमारे पास 0 0 0 x 0 0 0 0. अब क्या करेंगे,
अब इसको हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे 3 टाइम्स, तो व्हाट यू गेट इज 0 0 0, x शुड गो 3 टाइम्स का मतलब यहाँ पे आ जाएगा x 0 0 0 0, यहाँ से बाकी जीरो इधर से एंटर हो जाएंगे। ये मैच किया था और इसको शिफ्ट टाइम 3 कर दी। अब देखें x जो है वो बिट अपनी जगह पे आ गई है। अब बिट y का भी यही करेंगे। आप बताएं बिट y का क्या करेंगे? बिट y को k के साथ क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? आप किससे मैच करेंगे y निकालने के लिए? किससे मैच करेंगे इसमें से y निकालने के लिए? कोई नहीं बोल रहा। सर 0 0 0 0 और 1 0। 0 0 0 1 0 से इसको एंड करेंगे, यू गेट y। एंड ऑपरेशन। अब इसको हम क्या करेंगे? शिफ्ट राइट करेंगे 3 टाइम्स, इट विल कम 0 0 0 y 0 0 0 0। एंटर जीरो ही हमेशा एंटर होते हैं इसमें, तो दिस विल बिकम इक्वल टू दिस। इसके नीचे लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे। 0 0 0 0 0 y 0 0। 3 दफा शिफ्ट कर दिया, 1 2 3, 3 टाइम्स शिफ्ट राइट। ये 3 जीरोस जो हैं ये नए आ गए हैं, दीज आर अनइनवाइटेड गेस्ट जो चलते हुए इस बिट वाई के अंदर आ गए। अब हम क्या करें? हमारे पास ये बिट एक्स में वैल्यू आ गई है जो कि करेक्ट जगह पे आ गई हुई है, ये है। वाई में वैल्यू आ गई है, वो भी सही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हम जो है ना उसके बगैर नहीं होगा कि के को हम एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क एक्स क्वेश्चन मार्क वाई क्वेश्चन मार्क, इसको एंड करेंगे 1 1 1। ये मैस्किंग लगानी पड़ेगी इसको। देन द के विल बिकम इक्वल टू, एंड ऑपरेशन के बाद ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क 0 क्वेश्चन मार्क 0 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम जब इसको बिट एक्स के साथ और बिट वाई के साथ और करेंगे, एक्स के साथ आर किया बिट एक्स के साथ, तो बिट एक्स कहां पे है? ये 0 0 0 0 0 0 x 0, और बिट वाई के साथ भी इसको आर किया तो ये हो जाएगा 0 0 0 y 0 0 0 0। जब इनका आर करके आंसर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 0 0 y 0 0 x 0। एज यू कैन सी, इससे कंपेयर करें कि न्यू के इज इक्वल टू दिस। सो यू कैन सी हियर कि वो जो हार्डवेयर फॉल्ट थी कि ये दोनों तारें उल्टी लग गई थी हार्डवेयर में। जरा ऊंचा करना यार, थोड़ा सा ऊंचा। और हार्डवेयर में ये दो तारें उल्टी लग गई थी, एक्स और वाई। तो कोई मसला नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको सारा अपना डिजाइन उठा के कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए।
तो आप इस तरह से इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कैन हेल्प समटाइम, so that is exactly why these microcontroller courses shows you how uh, tightly bound together are hardware and software. They are really helping each other. जहाँ हार्डवेयर फंस जाती है वहाँ सॉफ्टवेयर कैन हेल्प, जहाँ सॉफ्टवेयर कई दफा फंस जाती है हार्डवेयर कैन हेल्प. So they are both helping each other to get the desired result. अभी आपका ये जो माइक्रो कंट्रोलर है पिक 18F46K22, इसकी अगर आप पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यू विल सी के हर पिन का लिखा हुआ है कि ये पिन के साथ क्या काम हो सकता है. एनालॉग इनपुट 0 का है तो बाकी काम है. लेकिन अगर आप वही अगर आप 46 के 42 ले लें, 18F46 के 42, तो उसमें कोई बिट्स जो है ना उनको डिफाइंड ही नहीं है कि वो क्या है, कहाँ पे है. पोर्ट्स का डिफाइन है, पोर्ट ए ये है, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी ये है, लेकिन आप किसी भी बिट को कहीं भी मैप कर सकते हैं. आप पीडब्ल्यूएम जो है, इसके केस में पीडब्ल्यूएम एक पर्टिकुलर बिट के ऊपर आती है, आप उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैप पीडब्ल्यूएम टू पोर्ट सी डॉट पिन 5. तो उससे जो है ना और भी ज्यादा हार्डवेयर प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यू आर नॉट बाउंड बाय कि इन्हीं पिनों के ऊपर यही चीज लगनी है और कल अगर डिजाइन गलत हो गया तो क्या होगा. तो मैनी processes have all the functionalities. इंटरप्ट किस पे आएगी? इंटरप्ट 0 पोर्ट बी पे आती है, लेकिन अगर आपकी पोर्ट बी बिजी है किसी और काम के लिए तो फिर आप इंटरप्ट तो यूज ही नहीं कर सकेंगे. तो जो मैपेबल प्रोसेसर होते हैं आप उनमें कहते हैं कि लेट मैप इंटरप्ट 0 ऑन दिस पिन. उसमें ये होगा कि इंटरप्ट जो है ना वो अगर उस पिन पे इंटरप्ट आएगी तो आपका तो कोई भी पिन आप उसमें डिफाइन कर. तो दैट रीडिफाइनेबल बिट्स जो है ना, मैपेबल बिट्स जो है, इससे जो है ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती. तो वो जरा थोड़ा महंगा प्रोसेसर होता है इसलिए हमने वो यूज नहीं किया, एंड वी आर इन अ ट्रबल. 18F46 के और 18F46 के 42, 22 और 42 का ही फर्क है. वो दोनों पिन टू पिन कंपैटिबल है, ये नहीं है कि आप उसको पोर्ट्स वगैरह के हिसाब से वो सेम है, और अगर आप कुछ भी मैप डिफाइन ना करें दे आर सेम. डिफॉल्ट वही है जो कि 42 में है वही 46 में है, लेकिन आप रीमैप कर लें बाद में तो आपको बड़ा आसानियां हो जाती हैं. कोई भी बिट जो है ना किसी भी फंक्शन के लिए, अभी हम सीरियल पोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी 22 के अंदर यू आर बाउंड टू यूज पिन नंबर C6, बिट सी की बिट पोर्ट सी की बिट 6 एंड 7. लेकिन 42 में अगर आप 42 ले लें प्रोसेसर, तो उसमें आप कोई भी बिट कह सकते हैं कि ये मेरी सीरियल पोर्ट की ट्रांसमिट बिट है, ये मेरी सीरियल पोर्ट की रिसीव बिट है. इनपुट बिट रिसीव, आउटपुट बिट ट्रांसमिट. So you can remap them. So basically what I'm trying to say is that hardware and software, they work together in microcontrollers. Mm, and you have to know both of them to really make some good interesting design. So that's it for today. Thank you very much. कोई question? कोई question? No questions? Okay, let's finish then. Thank you very much.